हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस ऑन माय चैनल। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बिफोर दैट आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स। अभी सब कोई अच्छा है, सबका सही चल रहा है समय। आई होप सो, आई प्रे फॉर दैट एज वेल। So with that being said, the first thing that I'm going to do, I mean, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, चैनल में पहली बार कर रहा हूँ, is I'm going to build a new PC and I'm going all out for this build. And अभी जस्ट सामान आया, मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करूँगा। फिर बिल्ड का मुझे पता नहीं if I'll be able to do the video, क्योंकि अकेले वो सारा चीज़ मैनेज करना, कैमरा भी मैनेज करना, दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी डिफिकल्ट। सो कन्फिग्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। इट विल बी इंटेल 12900KF एल्डर लेक, नया प्रोसेसर है। अभी बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया भाई, मतलब वेंडर को बोल बोल के जुगाड़ किया। मदरबोर्ड इज Asus Z9 Z690 मैक्सिमस, और क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, अभी खोल के देखूँगा। अनफॉर्चुनेटली 5200 मेगाहर्ट्ज़ का जो रैम था दैट वाज सोल्ड आउट। आई हैड टू कंटेंट विथ 4800 रैम। And the cabinet is the biggest ever cabinet made, Corsair Obsidian 1000D। ये बोल के फिर चलो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर देखते हैं फाइनल बिल्ड कैसा होता है। और एक चीज़, फाइनल बिल्ड में अभी मेरा कुछ रेडिएटर्स वगैरह पेंडिंग है। 2 480 का रेडिएटर्स है Corsair का XR7, और एक 420 mm का XR5 रेडिएटर है Corsair का। उसको छोड़ के 6 LL140 फैंस भी पेंडिंग है, वो शायद से मंडे को मिलेगा। तो पूरा बिल्ड तभी मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। फॉर द टाइम बिंग पुराना बिल्ड का जो XR7 360 mm का रेडिएटर्स हैं और जो LL120 फैंस हैं, उनसे बिल्ड करूँगा फ़िलहाल। तो चलिए देखते हैं सामान कैसा आया। सो गाइस, जैसे आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्टफ दैट आई जस्ट रिसीव्ड। कैबिनेट का बॉक्स, आपका डब्बा का साइज़ देख के ही पता चल रहा होगा हाउ बिग इट्स गोइंग टू बी। लिटरली सी इट्स अ मॉन्स्टर। तो चलिए अभी आपके सामने खोला जाए पैकेट। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी भी जैसे उन्होंने वेंडर ने भेजा वैसे ही है। आपके सामने ही मैं सील कट रहा हूँ इसका। तब आज तो भाई बहुत खुशी है, मतलब बच्चों को जैसे चॉकलेट या टॉफ़ी मिलने पे होती, इतनी खुशी है। चलो बॉक्स तो खुल गया एक। तो अभी देखा जाए इसका कंटेंट्स क्या है। सबसे पहले बिल हटाते हैं। एंड हियर इज द मदरबोर्ड इन ऑल इट्स ग्लोरी। इट्स द ROG Maximus Z690 फॉर्मूला, पूरा वाइट कलर का मदरबोर्ड है। तो सब हटाते हैं फिलहाल, और भी बिल्स हैं, बिल्स को भी हटाते हैं भाई। हाँ, ये है प्रोसेसर 12900KF। ये है मदरबोर्ड। ओ भाई साहब, ये तो बहुत भारी है यार। एक हाथ से कैम और दूसरे हाथ से ये नहीं उठाया जाएगा भाई। देखते हैं फिर भी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बहुत भारी है भाई। कम से कम आई गेस इन पूरा पैकेज कुछ एक 6 किलोस का तो कम से कम होगा। और ये बाकी 2 LL120 के फैंस मंगाए थे, ट्रिपल पैक। ये हो गए फैंस। और ये हो गए रैम। अनफॉर्चुनेटली जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो चलिए अभी देखते हैं केस का। चलिए दोस्तों, अब ये खुलते हैं। थैंक्स टू माय वाइफ फॉर होल्डिंग द कैमरा, वरना अकेले तो ये भाई संभलेगा नहीं। इसका वेट इज समथिंग अराउंड लाइक 30-35 किलो का वेट है सिर्फ। इट्स अ मॉन्स्टर। और एक कैबिनेट बहुत मुश्किल से मिला।
बाहर भी इसके बिल्ड्स, मतलब इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के बहुत कम बिल्ड्स मिलेंगे इसके ऊपर आपको, तो कैबिनेट मिलना ही थोड़ा मुश्किल है। लेकिन थैंक्स टू माय वेंडर विशाल पेरिफेरल्स, उन्होंने चलो मंगा के दिया। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। ये पहली बार ही खोल रहा हूँ, तो आई होप टेम्पर्ड ग्लास वगैरह एकदम सही से आए हैं। भाई साहब ये तो सिर्फ एक ग्लास है, को दिखाता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। ह्यूमंगस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन से। ये सिर्फ भाई एक डोर का थिकनेस है, आपको दिख रहा है? दिस इज जस्ट वन डोर। बिल्ड क्वालिटी तो मतलब जबरदस्त है। ये देखो गाइस, इट्स लिटरली ह्यूज। तो ह्यूज इज एन अंडरस्टेटमेंट। इसको आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ थर्माटेक व्यू 71, जो कि एक काफी पॉपुलर केस है, उसके साइड में। साइज देखो सर, पता चल जाएगा। दिख रहा है? मीन हाइट में भी देख सकते हो आप। एक इधर एंड होता है, ये उससे कम से कम तो काफ़ी बड़ा है। सामने से भी देख सकते हो आप, दोनों का हाइट और विड्थ में डिफरेंस। So friends, as you can see, the build is now ready. So the build consists of a Core i9-12 900KF, which is cooled by the Corsair XC7 CPU monoblock. The motherboard is the Asus ROG Z690 Maximus formula, and the VRMs for this board can be liquid cooled. The block is from EK, it's integrated into the motherboard, and I am using that. Other than that, the board's build quality is awesome. You can see the earlier part of the video when I first lifted the motherboard box. It's very heavy, because this entire part is metal. This whole frame that you see is metal, and if you observe, there's a white part over here. That's the motherboard backplate, and that's also completely metal. If you observe from here as well, from the sides, here you can see that the motherboard backplate, and that's also metal. The motherboard is really well built. It's really heavy. Other than that, I have the Kingston Fury DDR5 modules over here. Each is 16 GB, total of 32 gigs. The speed that I was able to get was 4800 megahertz, but I've overclocked it to 5000, and it's running fine. The graphics card is something I am using from my previous build. That's the RTX 3090, and that's again cooled by the Corsair water block. The power supply is inside this, and that's also from my previous build. That's the Antec HCG 1000 Extreme. As far as this cabinet is concerned, you can see the space is literally huge. मैंने जब खोला था तभी आपको दिखाया था. It's literally huge. This is the space where you can install another system, MITX, a mini ITX system, and you can route the power cables from here. और आपको दिख जाएगा, here you have the outlet for mounting a vertical GPU. यहाँ पे अगर आप मदरबोर्ड लगाओगे, यहाँ से ग्राफिक्स कार्ड आपको बाहर निकाल सकते हो आप. This is the hard drive caddy. You can install, I guess, 5 or 6 hard drives inside. और पीछे जो ट्रेज है, you can install another 7 2.5 inch SSDs or 2.5 inch drives.
As you can see, the case is filled with multiple rubber grommets which help do the cabling or cable routing very easily. uh, the reason why I went with soft tubing rather than hard tubing is I prefer upgrading the systems pretty frequently, and if I do a hard tubing, the major challenge is every time you change, you would have to then bend your pipes and go through a lot of, I mean, you have to spend a lot of time, which I didn't want to. Other than that, the number of radiators have changed. So this is the one that you see here. This is the XR7 480 mm radiator. So we have push pull over here. So total of 8 fans for this radiator. The one that you see beside it is the XE7 360 mm radiator that has 6 fans in push pull, and there is one fan at the bottom just to complete the look. Otherwise वो सामने से वो complete, ये जो आपको 8 फैंस यहाँ पे दिख रहे हैं, that wouldn't show up, वो एक कम दिखेगा. And on the top, as you can see here, this is the XR5 420 mm radiator. I wanted to do a push pull, लेकिन जैसे आपको दिख रहा है, I've already, I mean, this is barely touching those inlet and outlets, so वो मैं नहीं कर पाया. I was not able to do a push pull for this one, unfortunately. और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, the one that you see here, if I remove this thumb screw and lift this up, these trays are telescopic. ये बाहर आ जाते हैं ऐसे both, and in the front you have a dust filter here. At the top as well you have a dust filter here, and at the bottom वो PSU के उधर the bottom side there is also a dust filter. So the cabinet itself is heavy, but once the build is done, it's now really heavy. इसको हटाना तो मतलब it's a pain. Overall, I'm really happy with the build. As you can see, the CPU temps are also pretty fine. So बहुत मतलब heat is being contained pretty good. Even though the XE7 CPU block, the one that I have installed, is from my previous build that I was using with the Ryzen 3900X, is not compatible with LGA 1700, because this block supports only till LGA 1200 for Intel. But the Asus motherboard has slots to install a LGA 1200 cooler as well, but there might be issues with stack height for the cooler and the IHS and the cold plate of the cooler not making proper contact and causing overheating at times. Unfortunately, in India, as of now, LGA 1700 blocks from EK or Corsair are not available. I have opened a support ticket with Corsair to get a block, but till now I have not heard back from them. If I do, then yes, I'll make a follow-up video to show if there is any difference between LGA 1200 and a LGA 1700 CPU monoblock. With that being said, friends, I mean, at these times when getting hardware is very difficult, I had to go through a lot of loops and bounds to get my hands on these hardware, because right now if you check on the market, even internationally, getting DDR5 RAM and stuff is really, I mean, next to impossible. But somehow I was able to get these and these were not sponsored. I got these, I purchased these with my hard-earned money. So if you do like the video, please click on the like button and do subscribe to the channel. See you in the next one. Thank you.